Yes, it's you. This is how your face becomes when you listen the word thermodynamics. And I'm here to remove that fear, make you understand, like and love chemistry. Hello friends, I'm Dr. Hina Sheikh, back with you again to clear some more concepts of chemistry. Our today's topic is chemical thermodynamics. Just a part of it I'm covering here. Each slide I'll be explaining in English as well as in Hindi, and at the end I'm going to show you the most important concept of thermodynamics that you must remember. So stay tuned, watch the video till the end. Let us first understand what is thermodynamics. What all things do we study in thermodynamics? I'll give you an example. You all have seen ice cubes. Ice, correct? So this ice, if you keep on the table, what will happen? It will melt, correct? So it has melted, it has become water. So this water, if you keep back in the fridge, it will become ice again. You keep it back on the table, it will become water. So this process of ice water can go on n number of times, right? Same way, if you, I'll give another example. Take a bowl of water and put some salt in it. If you keep it outside in heat, what will happen is the water will evaporate, and what would be left is just the salt. Again, you put water in it, keep it back in the heat, the water will evaporate, you'll get back salt. This process also you can do n number of times till you want. On the other hand, you take an egg, prepare an omelette out of it. So this omelette, if you keep back in the fridge, it will not become egg, correct? So why has it happened? Some processes are reversible, some are non-reversible. Have you people heard of the word allotrope? So carbon has got allotrope, forms of carbon. Carbon has diamond as an allotrope and graphite as one allotrope. Graphite is what is there in the pencil. The lead of the pencil is graphite. And diamond we all know. So these two are nothing but allotropes of carbon, the same compound carbon. Now if this graphite and carbon I keep side by side for years together, they will not get converted into each other. Like my graphite is not going to become diamond. Whereas if I keep ice and water close to each other, right, my ice is going to become water, but my graphite is not going to become diamond if I keep them side by side. So why does some reactions go only in one direction? Why some reactions are possible, why some reactions are not possible, why some reactions are reversible, why some reactions are not reversible? This is all we study in thermodynamics. And now let me tell you the reason. Always remember the energy, the reaction always goes downhill. The reaction always go downhill. What does it mean? It means that suppose you are standing in a train, okay, if you get a seat to sit, so what you'll do, obviously you will sit. If you get more space, you'll just lie down, because this is because you tend to go in a state where less energy is required, correct? So my system also, it will tend to go in a state where less energy would be required. Means wherever less energy is possible, it will try to go in that state. So energy always go downhill. From up, it will go down. So wherever energy downhill is possible, it will go. If suppose you are sitting and some space is there to stand, obviously you will not stand just because there is space. Whereas if you get space to sleep, you will definitely sleep, correct? So if you get chance, you can go in downhill direction, low energy direction, correct? Not in the high energy direction. So this is the reason. Let us see all these things in Hindi. I started with the concept of ice. तो आप आइस, एक आइस क्यूब ले लो. इस आइस क्यूब को आप टेबल पे रखो. टेबल पे रखने के बाद क्या होगा कि आपका आइस क्यूब मेल्ट होके वाटर हो जाएगा. इस वाटर को आप दोबारा फ्रिज में रखो, वो आइस बन जाएगा. उस आइस को वापस आप टेबल पे रखो, वो बर्फ बन जाएगा. सो दिस ये आइस और वाटर, वाटर और आइस होता ही रहेगा. जितनी बार आपको ये प्रोसेस करना है आप कर सकते हो. सेम वे एक बाउल में आप वाटर ले लो, उसमें सॉल्ट डालो, हीट में रखो, धूप के अंदर रखो. धूप में रखने से क्या होगा कि आपका वाटर इवापोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है?
तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ आपका सॉल्ट बचेगा। इसमें आप अगर दोबारा वाटर डालते हो, दोबारा पानी डालते हो, तो क्या होगा? सॉल्ट वाटर बन जाएगा। फिर इसको आप हीट में रखो, धूप में रखो, तो फिर वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको जितनी बार करनी है आप कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जबकि एक दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं कि आप फ्रिज से एग निकालो, उसका ऑमलेट बनाओ। इस ऑमलेट को अगर आप दोबारा फ्रिज में रखते हो तो वो एग नहीं बनेगा, वो दोबारा रॉ एग नहीं बनेगा। सेम वे एक और एग्जांपल आप ले लो, आपने सुना होगा कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। सो ग्राफाइट एक एलोट्रोप है, डायमंड एक एलोट्रोप है। ओके, डायमंड आपको पता है, और ग्राफाइट होता है, पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्राफाइट है। ये दोनों एलोट्रोप है कार्बन के। अगर इन दोनों को आप आसपास रखो, बहुत सालों तक रखो, तो भी कुछ नहीं होगा, हमारा ग्राफाइट ग्राफाइट ही रहेगा, डायमंड डायमंड ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप आइस क्यूब को वाटर में रखते हो तो वो मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? कुछ रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, कुछ रिएक्शन हो ही नहीं रहा है और कुछ रिएक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, गाँव की ट्रेन। अगर आपको बैठने के लिए सीट मिलती है तो ऑब्वियसली आप बैठ जाओगे। अगर आपको लेटने के लिए जगह मिल जाए तो आप लेट जाओगे। आप लेटे हुए हो और खड़े होने के लिए जगह है तो ऑब्वियसली आप खड़े नहीं रहोगे, आप लेटे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो लो एनर्जी स्टेट में, आपको बैठने के लिए कम एनर्जी लगती है, आपको लेटने के लिए और कम एनर्जी लगती है। ओके, सेम वे हमारे रिएक्शंस भी लो एनर्जी स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट में जहां उनको कम एनर्जी लगती है, उसको हम कहते हैं डाउनहिल। द रिएक्शंस ऑलवेज गो डाउनहिल, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ वो लोग जाते हैं। Okay, and this is all we study in thermodynamics. Very simple, very easy. Let me go on to the next slide. Let us now understand the concept of system, surrounding, and universe. What is a system? Suppose you take a conical flask. You all have done experiment in the lab. This is your, suppose your conical flask. This is where you are doing the experiment, doing titration. So your conical flask becomes your system, because there you are doing the reaction. So wherever you are doing reaction, that is your system. Everything surrounding it is your surrounding. Everything surrounding means your atmosphere is the surrounding. So what you'll have to remember, system plus surrounding is equal to universe. System is where the reaction is going on. System is where you are working. What is surrounding? Everything around it is the surrounding. And system plus surrounding becomes the universe. Let us see this in Hindi again. Suppose आप टाइट्रेशन कर रहे हो कोनिकल फ्लास्क लेकर, तो आपका कोनिकल फ्लास्क बन जाएगा आपका सिस्टम। सिस्टम वो होता है जहां रिएक्शन हो रही है, जिधर आप स्टडी कर रहे हो उसे कहते हैं सिस्टम। जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो आपका सिस्टम है। ओके, अगर मैं एक तोप में खाना बना रही हूँ तो वो वेसल मेरा बन जाएगा सिस्टम। ओके, सराउंडिंग किसे कहते हैं? उसके आसपास आपका जो भी एटमॉस्फेयर है उसे कहते हैं हम सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। I hope this is understood. I'll go on to the next slide. Let us now understand type of systems. There are three types of systems: open system, closed system, isolated system. Now, what is open system, what is closed, and what is an isolated system? I'll give you a good example. Suppose I am recording this video and I have ordered tea. Okay, so somebody has brought tea for me. If I just keep it open, my tea will grow cold. Correct? My tea will grow cold. So that is closed system. That one cup will remain one cup. That one cup will not decrease. Right? So that is my closed system. What is closed system? Closed system is where two things we consider. We consider exchange of matter and we consider exchange of heat. So in closed system, heat exchange is possible and matter exchange is not possible. Means my one cup will remain one cup, whereas it has exchanged heat with the surrounding, it has become cold. Okay.
The next type of system is isolated system. What happens in case of isolated system? Suppose I order the tea in thermos. So in the thermos, tea will not grow cold. Okay, so there is no exchange of heat possible. There is no exchange of matter possible. One cup will remain one cup. Correct? Now, what are open systems then? Open systems are all human beings. Open systems are all human beings. So I'm sorry, not human beings, living beings. Okay, all living beings. So all living creatures, they eat food, okay, and then they excrete the waste product. So matter exchange is possible. Also, sometimes we get temperature. Our temperature sometimes decrease, sometimes it increase. So heat exchange is possible in open system, and matter exchange is also possible in open system. So what is a open system? In open system, there is exchange of heat as well as matter possible. In closed system, only heat exchange is possible, matter exchange is not possible. And isolated system is the one which exchanges neither heat nor matter with the surrounding. So open system exchange heat as well as matter with the surrounding. Closed system exchange only heat with the surrounding and not matter. And isolated system neither exchange heat nor matter with the surrounding. Let us understand this in Hindi now. Open system, closed system and isolated system, ये तीन सिस्टम के टाइप्स हैं. अगर आपको पूछे कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं तो आप कहेंगे कि तीन टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड. मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ. समझो मैंने एक चाय ऑर्डर की है कप में. अगर बहुत देर तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तो क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी. करेक्ट? मतलब उसने एनवायरनमेंट के साथ अपना हीट एक्सचेंज किया. चाय गर्म थी, चाय ठंडी हो गई. ओके, लेकिन वो एक कप ही रहेगा, वो एक कप आधा कप नहीं हो जाएगा. राइट? इसे कहते हैं हम क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम वो होता है जो एनवायरनमेंट के साथ सिर्फ हीट एक्सचेंज करता है, मैटर एक्सचेंज नहीं करता. यानी वो ठंडा हो जाता है पर उसके अंदर जो अमाउंट है वो वही होता है, वो कम नहीं होता. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं चाय थर्मोफ्लास्क में मंगाती हूँ तो चाय ठंडी भी नहीं होगी. करेक्ट? और वो एक कप ही रहेगा, वो एक कप आधा कप नहीं हो जाएगा, वो एक कप दो कप नहीं हो जाएगा. राइट? सो इसे कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज हीट, कैन नॉट एक्सचेंज मैटर विद द सराउंडिंग. ना वो हीट एक्सचेंज कर सकता है, ना वो मैटर एक्सचेंज कर सकता है. अब देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है. जितने भी जीवित प्राणी है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो सारे होते हैं ओपन सिस्टम, क्योंकि वो हीट भी एक्सचेंज करते हैं और मैटर भी एक्सचेंज करते हैं. यानी हम खाना भी खाते हैं और वेस्ट मटेरियल्स भी बाहर निकलते हैं. तो ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम विच एक्सचेंजेस हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग. यानी ओपन सिस्टम हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है सराउंडिंग से. क्लोज सिस्टम क्या करता है, वो सिर्फ हीट एक्सचेंज करता है, वो मैटर एक्सचेंज नहीं करता. और आइसोलेटेड सिस्टम हीट एक्सचेंज नहीं करता और मैटर भी एक्सचेंज नहीं करता. So with this, now I move on to the next slide. Let us see what is boundary or wall. Let us first see the definition, then I'll explain you the types. Boundary or wall is something which separates the system with the surrounding. What I said, boundary is something which separates the system with the surrounding. So if you are working in the conical flask, the conical flask has got some boundaries. Correct? This wall is called as the boundary, which separates your system with the surroundings. Okay, so the thing which separates the system with the surrounding, this is called as the boundary or the wall. There are three types of boundaries. If you see, if it exchange heat or matter with the surrounding, the first type is open boundary, closed boundary and isolated boundary. As you have learned from the earlier slide, what is open boundary? Just remember the word allows. Boundary allow, boundary don't allow. So what does boundary allow in open system? In open system, boundary allows the exchange of heat as well as
matter with the surrounding. Closed system, boundary allows exchange of heat, not the matter with the surrounding. And isolated system, boundary does not allow exchange of heat, neither matter with the surrounding. Okay, so I hope you have understood. It is same as the type of systems. Here you just have to remember the word allows. So boundary will allow, boundary will not allow. Whatever boundary allow, that exchange will take place. Whatever boundary don't allow, that exchange will not take place. What is adiabatic and diathermic? Now, whenever you are working in the lab or whichever thing you do in general, we do not see the exchange of matter because matter usually don't get exchanged. Because if suppose I'm doing titration, the solution will remain inside the system. Okay, it will not come out. Same way, if my cup of tea is there, usually one cup is one cup, correct? It does not exchange matter with the surrounding. So when we just consider the exchange of heat, we can say on exchange of heat, with respect to exchange of heat, the boundary or wall can be differentiated as adiabatic or diathermic. So there are two ways of classifying boundary or wall. First way is open, close, isolated, and the second way is diathermic or adiabatic. So what is diathermic and adiabatic boundary? Diathermic boundary is the one which allows diathermic boundary is the one which permits or allows the exchange of heat. So diathermic boundary allows exchange of heat with the surrounding, or you can say it allows the exchange of energy with the surrounding in the form of heat. What about adiabatic? You know that adiabatic boundary does not exchange heat with the surrounding. So adiabatic boundary are the boundary which does not allow exchange of heat with the surrounding. Okay, and if you have not understood, listen to this in Hindi. जिस तरह हमने सिस्टम के टाइप्स देखे, 3 टाइप के सिस्टम है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड. अभी देखते हैं बाउंड्री क्या होती है. बाउंड्री वो होती है जो आपकी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है. इस यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हो कोनिकल फ्लास्क है, तो कोनिकल फ्लास्क जो है वो उसका साइड्स सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग को, तो इस साइड्स को हम बोलेंगे बाउंड्री. अगर मैं चाय पी रही हूँ तो चाय का जो कप है उसका जो साइड है कप, ओके, वो है बाउंड्री और वॉल, क्योंकि वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है. अब 3 टाइप के बाउंड्री होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड. हमने देखा कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज कर रहा है. तो बाउंड्री के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, अलाउज. तो बाउंड्री वो है जो अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है? एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज. ओपन बाउंड्री वो बाउंड्री है जो अलाउ करती है मैटर एज वेल एज हीट, मतलब वो अलाउ करती है हीट एक्सचेंज होने भी अलाउ करती है और मैटर एक्सचेंज होना भी अलाउ करती है. क्लोज्ड बाउंड्री वो बाउंड्री है जो सिर्फ हीट एक्सचेंज अलाउ करती है, मैटर एक्सचेंज अलाउ नहीं करती है. और आइसोलेटेड बाउंड्री कुछ भी अलाउ नहीं करती है, ना वो हीट एक्सचेंज अलाउ करती है ना वो मैटर एक्सचेंज अलाउ करती है. ओके, यूजुअली हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा मैटर एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग से, हमारा मैटर उतना ही होता है, या तो हीट इंक्रीज डिक्रीज होती है या फिर हीट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है. तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो हमारा बाउंड्री और वॉल आर क्लासिफाइड एज एडियाबेटिक एंड डायथर्मिक. अगर आप हीट और मैटर दोनों देखते हो उस वक्त 3 टाइप्स है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड. सो ये एक और तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हीट एक्सचेंज करता है कि नहीं करता है. अगर उस हिसाब से हम देखें तो 2 टाइप है, एडियाबेटिक एंड डायथर्मिक. डायथर्मिक बाउंड्री वो बाउंड्री है जो हीट एक्सचेंज अलाउ करती है, एडियाबेटिक बाउंड्री वो बाउंड्री है जो हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करती है. I'll move on to the next slide. What is homogeneous and what is heterogeneous systems? Homogeneous systems are the systems whose properties remain same in all the direction. What is the meaning of property remaining same in all the directions? Suppose this I take, this is water, plain water,
So whatever is there here is same as here, is same as here, is same as here, is same as here. This is called as homogeneous. Its property is same in all the direction. Whereas if I say, if I take salt, saturated solution of salt, and this is water, so whatever is the property here, salt water, is not same as what is here, is not same as what is here. Okay, so whatever is here and here at different points, the properties are different. This is a different layer and this is a different layer. This is a different layer and this is a different layer. Okay, so there is a discontinuity, so it is called as heterogeneous system. Another way to study homogeneous and heterogeneous system is when you have a solid reacting with a liquid to give you a gas. Heterogeneous, when all are in same state, solid solid giving you solid, homo. Liquid liquid giving you liquid, homo. Gas plus gas giving you gas, again homo. When one is different, if this I make liquid, then it becomes hetero. If this I make liquid, again it becomes hetero. Let us understand this in Hindi now. होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां प्रॉपर्टी हर पॉइंट पे सेम होती है. अभी समझो मैंने बीकर में वाटर लिया है, अगर मैं यहाँ टच करती हूँ तो कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ देखा तो भी सेम है, यहाँ देखा तो भी सेम है, यहाँ देखा तो भी सेम है, यहाँ देखो तो भी सेम प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं हम होमोजीनियस. यानी थ्रू आउट आपके सिस्टम में प्रॉपर्टी सेम है. अब आप अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हो, पानी ले रहे हो, उसमें बहुत सारा नमक डाल रहे हो, तो नमक नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर नमकीन पानी बन जाएगा. यहाँ जो प्रॉपर्टी है और यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, क्योंकि नीचे सॉल्ट बैठा है और ऊपर सॉल्ट वाटर है. इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम. एक और तरीका है जहां आप होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम समझ सकते हो. अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड सॉलिड आपको सॉलिड दे रहा है, लिक्विड लिक्विड आपको लिक्विड दे रहा है, गैस गैस आपको गैस दे रहा है, तो उसे कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम. यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक ही स्टेट में है. अगर इनमें से कोई एक भी किसी और स्टेट में होता है, जैसे हमने यहाँ देख लीजिए सॉलिड प्लस सॉलिड गिविंग सॉलिड था, हमने इस सॉलिड को निकाल के लिक्विड कर दिया, तो अब ये बन जाएगा हेट्रोजीनियस सिस्टम. मतलब उसमें से कोई भी एक अगर अलग स्टेट में है, उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम. I come on to the next slide, intensive and extensive properties. Intensive properties are those properties which are independent of the amount of matter present. And extensive properties are those properties which depends upon the amount of matter. I'll give an example and explain you. Suppose you take boiling point of any liquid. Boiling point of water is what? 100 degrees. So you take a beaker, that much water, boiling point is 100 degrees. If you take a small beaker, boiling point of water again 100. You just take one spoon of water, boiling point 100. If you take a tank of water, at what temperature will it boil? 100. Okay. So boiling point of water is 100 degrees irrespective of the amount given. Such properties are called as intensive property. So how to remember this? Remember I for intensive, I for independent. Okay, intensive properties are independent of the amount of matter. Another example, let us see all the examples which are there. Very important question. So boiling point is an example of intensive property. Melting point is an example of intensive property. Density is an example of intensive property, because density of water is 1 irrespective of how much is the amount. Then you have color, odor, hardness, surface tension, and viscosity. All these properties are intensive properties, because these properties remains the same irrespective of the amount. Another thing you have to remember is, suppose I ask you, there is a substance whose density is 1. There's a substance whose density is 1. You will say water, correct? So this has become identity. This has become
Identity. So another word for I is identity. Intensive properties gives the identity of the compound. You can identify the compound on the basis of the intensive property. Okay. So this is intensive properties. What are extensive properties? Extensive properties depends on the amount of matter. Okay. Extensive properties depends on the amount of matter. For example, volume of small amount would be less, volume of more amount would be more. Okay, so small beaker volume is less, here volume more, here volume still more. Okay, so it depends on the amount of metal. Mass, weight and length, all these properties are extensive properties which depends on the amount of matter. Okay, so let us see all these things in Hindi again. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है मैटर के अमाउंट पे. यानी अगर आप कम ले रहे हो, सॉरी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर. यानी अगर आप कम सब्सटेंस ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी वही होगी, अगर आप ज्यादा सब्सटेंस ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी वही होगी. एक एग्जांपल देती हूँ, कलर ऑफ ब्लड. ब्लड का कलर क्या है? रेड. अगर एक बूंद भी आप ब्लड निकालते हो तो उसका कलर भी रेड होगा. अगर पूरी बॉडी का ब्लड भी आप निकालते हो तो उसका कलर भी रेड ही होगा. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? 100 डिग्रीज. अगर एक छोटे बीकर में वाटर लेते हो आप तो भी वो 100 पे बॉइल होगा. अगर एक टैंक वाटर है तो वो भी 100 डिग्रीज पे बॉइल होगा. एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आप ज्यादा वाटर लेते हो तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा बॉइल होने, जस्ट बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम टू रीच 100 डिग्री. 100 डिग्री पहुंचने के लिए उसको टाइम लगता है, पर वो बॉइल 100 पे ही होगा. कम पानी है तो जल्दी बॉइल होगा क्योंकि 100 डिग्री जल्दी पहुंच रहा है. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 ही रहेगा, आप कितना भी पानी ज्यादा ले लो, कितना भी पानी कम ले लो. ओके, सो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने रेड में लिखी है, boiling point, melting point, density, color, odor, hardness, surface tension, viscosity, ये सारी प्रॉपर्टीज है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ये डिपेंड नहीं करती है कि कितना मैटर है, वो हमेशा सेम होगा. ये लाइक डेंसिटी वाटर का एक है, 1 है, सो वाटर का डेंसिटी हमेशा 1 ही होगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी. ओके, विस्कोसिटी अगेन इज अ कांस्टेंट सम प्रॉपर्टी. सो विस्कोसिटी, एग्जाम्पल हनी ले लो आप, तो इतना हनी भी उतना ही विस्कस होगा, इतना हनी भी उतना ही विस्कस होगा, इतना हनी भी उतना ही विस्कस होगा, अनलेस आप उसमें पानी डालो तो उसका विस्कोसिटी मतलब उसका चिकनापन कम हो जाएगा, अदरवाइज उसका चिकनापन सेम ही होता है. ओके, सो दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी होती है, यानी उसकी पहचान होती है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, आप बोलोगे वाटर. ओके, तो उसकी वो पहचान हो गई, उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी. सो आई से आप रिमेम्बर याद रखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आई फॉर इंडिपेंडेंट एंड आई फॉर आइडेंटिटी. अब देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है कि कितना मैटर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका बहुत ज्यादा है. करेक्ट, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जैसे अमाउंट चेंज हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है. मास भी चेंज होगा, छोटी चीज का वजन कम होता है, बड़ी चीज का वजन ज्यादा होता है. वेट भी छोटी चीज का कम होता है, बड़ी चीज का ज्यादा होता है. लेंथ, छोटी चीज की लेंथ कम होगी, लंबी चीज की लेंथ ज्यादा होगी. ओके, सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि कितना है अमाउंट ऑफ मैटर. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, state function and path function. I'll give an example and make you understand state function, path function. First, you understand what is state function. State functions are the functions which depend only on the initial and the final state. I said state functions are the functions which depend only on the initial and the final state. It does not depend on the path followed. Suppose delta H is H2 minus H1. Okay, so this is called as state function because delta H is just
initial, depending on the initial and the final stage. Whether it has come here like this, whether it has come here like this, or like this, it does not depend. It does not count that. It depends only on the initial and the final stage. So remember, state function, all the properties like delta H, delta G, delta S, where answer is just S2 minus S1. Wherever you just write S2 minus S1, it is state function. I repeat the definition. State function are the function who depends only on the initial and the final state. It is independent of the path followed. So what is path function? I'll give you example. Suppose from the station, Charni Road station, this is my college. Okay, so from station to college, the distance is, suppose minimum fare of the taxi, which is 22 rupees. Okay, so if I from station I come to the college, I'll give taxi wala 22 rupees. Whereas if I take him for Mumbai Darshan and I come to the college, then will he cost me 22 rupees again? No, he will not cost me 20 rupees. He'll cost me more depending on the fare, because he has followed more path. Correct? So these properties are called as the path function, which depends on the path followed. What are path functions? Path functions are the functions which depends on the path followed. Okay, so let me explain you everything in Hindi again. State function and path function. State functions वो function होते हैं जो सिर्फ initial और final state पे depend करते हैं, वो path पे depend नहीं करते. जिस रास्ते से आप आए हो, जो रास्ता आपने लिया है उस तक पहुंचने के लिए, उस पे वो depend नहीं करते हैं. तो जहां भी आप पढ़ते हो, जैसे डेल्टा H हो गया, डेल्टा H is H2 minus H1, डेल्टा G G2 minus G1, डेल्टा S S2 minus S1. ओके, जहां भी ऐसा हो 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1, यानी वो सिर्फ 2 और 1 पे ही, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है. वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है. आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, आप कैसे आए 1 से 2 पे, आप कैसे आए वो डिपेंड नहीं करता. उसे कहते हैं हम स्टेट फंक्शन. पाथ फंक्शन क्या होता है? समझो स्टेशन इधर है, मेरा कॉलेज इधर है. डायरेक्टली अगर मैं टैक्सी से आती हूँ तो मुझे 22 रुपीज लगता है. अगर मैं टैक्सी वाले को लेकर घूमूं और पूरा मुंबई दर्शन करूं और फिर कॉलेज आऊं घूम फिर के, तो ऑब्वियसली वो मेरे से 22 नहीं लेगा, वो मेरे से ज्यादा लेगा. जितना उसका फेयर होगा, टैक्सी का जितना किराया होगा, वो उतना पूरा लेगा. मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि स्टेशन इज द इनिशियल पॉइंट, कॉलेज इज द एंड पॉइंट, उतना ही होना चाहिए. नहीं, क्यों? कि उसका ज्यादा पेट्रोल जला है. करेक्ट. इस फंक्शंस, ऐसी चीजों को हम कहते हैं पाथ फंक्शन. ओके, लाइक एनर्जी, वर्क डन, ये सब पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कि कितना, कौन सा आपने रास्ता लिया आने के लिए. सो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. हियर स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. I move on to the next type. There is something called as isothermal process, isobaric process, isochoric process, and adiabatic process. What is isothermal process? Remember, isothermal process is the process where your temperature remains constant. Okay, there is no change in temperature throughout the system. Means your change in temperature is zero. Okay, isobaric process, remember bar is the unit of pressure. So here the pressure is going to remain constant throughout the process and delta P is 0. What is isochoric process? Isochoric process is the process where your volume remains constant. Means delta V is equal to 0. No change. Delta V 0. Correct? And what is adiabatic? The heat content remains constant. Okay. Let us understand this in Hindi. 4 टाइप के हमारे प्रोसेसेस होते हैं: आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक. आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी आपने प्रोसेस की पर प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ.
उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। So temperature remains constant, change in temperature is zero. टेम्परेचर का जो चेंज है T2 माइनस T1 जीरो है, क्योंकि T2 और T1 T2 दोनों सेम है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। करेक्ट। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस आपका प्रेशर चेंज नहीं होता। दिस इज डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन प्रेशर इज जीरो। आइसोकोरिक वो है जहां वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, डेल्टा V इज जीरो। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां हीट कांस्टेंट होती है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। T फॉर थर्मल, सो T फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। कोरिक, remember volume. And adiabatic, you all know it is related to heat. I'll move on to the next slide. So what is zeroth law of thermodynamics? You have studied this maths when A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. So for this you have to remember the word thermal equilibrium. First of all, you should know what is thermal equilibrium. Thermal equilibrium means two compounds they have kept side by side. So what will happen? There will be exchange of heat from one substance to other. The hotter will become colder, the colder will become hotter, till both attains the same temperature. That stage is called as thermal equilibrium. Okay. So when any body A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with C, and this is the law. Don't just write down A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. This will not suffice. This will not give you marks in the exam. You have to write the statement that if two thermodynamic systems A and B, each of which is in thermal equilibrium independently, are brought into thermal contact, then there would be flow of heat from one system to the other, or no exchange of heat. That is thermodynamic process will result. Acha, if you don't remember this, I'll just give you a shortcut. Just write down in the exam, when any body A is in thermal equilibrium with B and any body B is in thermal equilibrium with C, then it means A is in thermal equilibrium with C, and that would be sufficient for zeroth law. Let us understand this in Hindi. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। सपोज मैंने एक चॉक ओवन में रखा, एक चॉक मैंने फ्रिज में रखा, तो फ्रिज वाला ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा, ओवन वाला चॉक गर्म हो जाएगा। अगर उन दोनों चॉक को मैं कांटेक्ट में लेकर आती हूँ तो एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगा टिल दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। उससे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अब समझो कोई, उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सो सपोज एक बॉडी है A, वो B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और वही बॉडी B एक्चुअली C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे कि A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो एनी बॉडी A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with C. Okay, I hope you will always remember zeroth law of thermodynamics. I move on to the next slide. First law of thermodynamics you have been studying from your lower standards. Very simple law. You have studied it n number of times and it has now rectified. So what is the law? The law is energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to other. Total form of energy remains constant. Also, one line you must have heard: whenever a quantity of heat, a quantity of energy is produced, exact amount of another kind of energy disappeared and the total energy remains the same. So I'll just explain you this with the help of an example. Suppose there is a genie. Okay,
So what will the genie do? Whatever you ask the genie to give you, he'll give you. On the other hand, something somewhere will disappear. Okay, so there was an episode long time back on Doordarshan, all the best, where this was shown that when whatever you ask genie, he'll give you. So you ask mobile to the genie, he'll give you mobile. In shot 2, they'll show you that the mobile has disappeared from somebody's hand and that person is crying. Okay, you ask the genie to give you ice cream, genie will give you ice cream, and shot 2, somebody's ice cream has disappeared and he is crying. So genie cannot create things. He can just steal it from some place and give it to you. Correct? So same is the first law, tells you about energy, that you cannot create energy. You cannot destroy energy. What you can do is you can just convert it from one form to the other. And obviously then the total form of energy remains constant. Also remember the statement, the internal energy of an isolated system is constant. What I said internal energy of isolated system. So system is isolated, correct? Not in contact with anything. So it is constant. Don't write 0, 1, 2 in exam. It is constant. Okay, it remains the same. Internal energy of an isolated system remains constant. This is the first law. Example we'll see, suppose water is stored in a dam. So if water is stored in a dam here, what energy will it have? It will have kinetic energy. Okay, it will have potential energy. Water stored in a dam, not in motion, potential energy. When it flows, okay, when it flows, it has kinetic energy. For whenever movement comes, there is kinetic energy. And when it comes back again, still, it becomes potential energy. And the total form of all the energies remains the same. Another example I give you, if the fuel is burnt in an open medium, what will happen? Energy would be lost entirely as heat. Whereas if you burn it in a car engine petrol is burned, right? So what will happen? A portion of energy is lost as work to move the car and rest is lost as heat. Okay, so it has become heat. It is not lost, it has become heat. So let us understand first law of thermodynamics in Hindi. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट हमने बहुत बार सुनी है, पढ़ी है. वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, तो टोटल एनर्जी जो है वो सेम होगी. अब बहुत सालों पहले एक एपिसोड आया था, मुझे याद है, दूरदर्शन पे, ऑल द बेस्ट. वहां एक जीनी आता है, वो जीनी से आप जो भी मांगते हो वो आपको देता है. ठीक है, सपोज आप अगर उससे आइसक्रीम मांग रहे हो तो आपको आइसक्रीम देगा. और शॉर्ट 2 में वो दिखाते हैं कि कहीं किसी के हाथ से आइसक्रीम डिसअपियर हो गई, गायब हो गई और वो रो रहा है. ठीक है, फिर आपने मांगा जीनी से मोबाइल, तो जीनी ने आपको मोबाइल दिया और स्क्रीन 2 में हम देखते हैं कि किसी के हाथ से मोबाइल गायब हो गया और वो रो रहा है. तो जीनी ने क्रिएट नहीं किया, जीनी ने पैदा नहीं किया मोबाइल, जीनी ने कहीं से लिया और आपको दिया. सेम वे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर कहीं एक फॉर्म एनर्जी गायब हो गई तो उतने ही अमाउंट की एनर्जी किसी और फॉर्म में कहीं और अपीयर हो जाएगी. ओके, तो एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Now has come the most important part of thermodynamics, the sign convention. Without this, all your numericals will fail. You cannot solve numericals if you don't know sign convention. For solving the numericals of work done, I'll prepare another video separately and share it with you. Okay. So now you just remember about sign conventions. Very important because it can come in MCQ, it can come in match the following, true or false. It can come as a short answer, and obviously you cannot touch numericals, you cannot do numericals if you do not understand sign convention. So let us see that two types of process, exothermic process and endothermic process. Okay, exothermic, endothermic.
Exothermic process is the process where heat is lost. Heat is lost from the system. Okay, systems evolves heat. Heat lost होता है. On the other side, second type is endothermic process. Endothermic process is where the heat is gained by the system. System heat absorb करता है. Okay, तो उसका surrounding actually ठंडा हो जाता है, पर system ने heat absorb कर ली है. I'm so sorry. So endothermic process is the process where heat is gained by the system, means the surrounding will become. I really got confused speaking in Hindi, speaking in English, so everything has got mixed up. I'm so sorry for that. So endothermic process is where the heat is gained by the system, means it has absorbed heat from the surrounding. Your surrounding has become cool because the system has taken up the heat. Okay. Also remember who is doing work. In exothermic process, who do work? Work is done by the system. Okay. Another thing is whenever work is done by the system, it is expansion. What is expansion? Expansion is work is done by the system. System expands. You don't expand the system. System expands on its own. On the other hand, remember what is work done on the system? It is compression. What is compression? You do work on the system. Okay, you compress the system. So work is done on the system. Followed. So this is one category, exothermic or heat lost or work done by the system or expansion. One category. Second category is any endothermic process or heat gained or work is done on the system, because while work is done on the system, heat is gained by the system, energy is gained by the system, or compression. Okay, two categories. I'll give you an example and make you understand. Suppose I've got a money box, okay, in which I've kept all my money. If you give me money, what will happen? My money will increase and I'm happy, so I'm positive, correct? Whereas if you ask me to do expenses and my box money is decreasing, I'm not happy, negative, correct? Same way, whenever system gets heat or energy, when system's energy increases, everything is positive. Q positive, W positive, U positive. Okay, whenever system's energy is decreasing in any form of heat or any form, then Q is negative, W negative, U negative. Now you tell me, when work is done by the system, system is doing work, so its energy will decrease, correct? If it is expansion, obviously system is doing work, energy will decrease, so this becomes negative, this becomes negative, this becomes negative. Okay, heat is lost by the system, energy system is losing. Okay, so all is negative. On the other hand, take the second process where you do work on the system. When you are doing work on the system, system's energy will increase, or when you are doing compression, system energy will increase. Heat is gained by the system, heat gained, energy is increased. So all these things would be positive. Okay, let me quickly explain you. This video has become very long, but obviously each and every word I have spoken here is of importance. I have not just stressed it. It is important because if I just jumped over, then you would have not understood anything. I had to explain you each and everything. That's why it has taken time. But no worry, your time has not gone waste. You have utilized your time. It is just the time of one lecture where you have studied material of 6 lectures. Okay, so let me explain you sign conventions in Hindi. दो टाइप के प्रोसेस है, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां सिस्टम की हीट लॉस्ट होती है, सिस्टम हीट देता है. ओके, सिस्टम में से हीट बाहर जाती है. दूसरा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जहां सिस्टम हीट गेन करता है. ओके, और वर्क डन अगर हम देखते हैं वर्क डन के तरीके से, तो या तो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है. सिस्टम क्या काम करता है? सिस्टम एक्सपांशन करता है. ओके, सिस्टम एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है वो. ओके, एक्सपांशन. या फिर आप सिस्टम पे काम करोगे, जब आप सिस्टम पे काम करोगे तो वो होगा कंप्रेशन. यू आर कंप्रेसिंग द सिस्टम, आप दबाते हो सिस्टम को तो वो कंप्रेस होता है. ओके, तो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, या तो सिस्टम काम करेगा या आप सिस्टम के ऊपर काम करोगे. ओके, दीज आर टू कैटेगरीज.
In the first category, अच्छा, I'll give you example and explain you this. अगर समझो आपके पास एक बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें पैसे हैं. अगर आप मुझे पैसे देते हो तो मेरा बढ़ जाएगा अमाउंट, मेरे पास जितने पैसे वो बढ़ जाएंगे. सो आई विल बी हैप्पी पॉजिटिव, करेक्ट. अगर आप मुझे खर्चा करने बोल रहे हो, सो दैट अमाउंट, जो मनी मेरे पास था वो डिक्रीज होगा, करेक्ट. सो आई विल बी नेगेटिव, नेगेटिव हो गई मैं, फाइन. सेम वे सिस्टम के पास तो पैसे नहीं है, सिस्टम के पास जो भी है वो एनर्जी है उसका. तो अगर सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है तो ये जितनी भी चीजें हैं Q, W और U, ये सारे हो जाएंगे, अगर बढ़ रहा है तो सारे हो जाएंगे पॉजिटिव. अगर कम हो रहा है सिस्टम का एनर्जी तो तीनों बिकम्स नेगेटिव. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज Q, W एंड U. Q is the heat, W is the work done, and U is the enthalpy. Enthalpy is nothing but heat. I will take some other time to explain you enthalpy, entropy, internal energy. At some other time I'll explain you these things. But just remember for the time's sake, U is enthalpy, also the internal energy. Okay, both will have the same sign. H actually is enthalpy and U is internal energy. So तो क्या होगा Q, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या उसकी सिस्टम की हीट कम हो रही है, यानी एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम काम कर रहा है यानी उसकी एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम एक्सपांड हो रहा है यानी उसकी एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, तो ये तीनों हो जाते हैं नेगेटिव. ओके, तीनों हो जाते हैं नेगेटिव. सेकेंड प्रोसेस हम देखते हैं. सेकेंड प्रोसेस में एनर्जी गेन हो रही है. ओके, सिस्टम की एनर्जी गेन हो रही है, हीट गेन हो रही है. आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो, तो सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है. ओके, तो इन तीनों केस में एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव. So I hope whatever was taught to you in this video is very well understood. The video has become long because many things I had to explain you in details. I have tried my best to teach you each and every concept properly. So if you still have any doubt, you can just comment it and tell me. I've done a lot of hard work in preparing this video for you. So please, just for my motivation, you can give it a thumbs up and do uh, share it with your friends. If you have still not subscribed, please subscribe my channel, and you can see further link of further videos which you can just watch for your more understanding. So thank you so much. This is all I had today. Thank you.